Hello and welcome. We are beginning a new chapter in Science 2, which is chapter number 8, Cell Biology and Biotechnology. And this is our first learning session. Okay, before we begin any new chapter, what do we discuss? We discuss what is so special about this chapter, right? Why should we study this chapter? So I'm going to talk about three applications of this chapter. So the first application is obviously the coronavirus, right? So the coronavirus, it's a type of a virus which enters your cells and it takes over the replication mechanism of our cells and it will duplicate itself, right? So if you really want to understand the virus and if you want to make a effective vaccine or an effective medicine against coronavirus, what you'll have to know is how does the cell function, what are the different organs of a cell, and how can you manipulate the different functions of different organs inside the cell for you to stop the virus, right? So all scientists who are working around the world to make a vaccine or to make a medicine for coronavirus, they know the cell and the organs of the cell inside and out. Okay, so that is one application in which this chapter has lot of importance. The next application is diseases in general, right? It's not just the coronavirus but any other virus, bacteria, fungus, whatever diseases you have, whatever microorganisms that attack your body and make you sick, all of them are going to attack you on the cellular level, right? Like all things in and around our lives, they are made up of atoms, right? So if I say a desk which is a wooden, which is generally made of wood. Wood is made up of small carbon atoms, right? Metals are again made of small atoms. So everything around us is made up of atoms, right? The smallest unit is atom. Similarly, everything inside living organisms, everything inside living beings is all made up of small cells, right? Cell is the smallest basic functional structure. So unless and until you know cell, because all the diseases are, which are going to attack your body and they're going to make you sick, all of them are going to operate at a cellular level. Cells को खराब करेंगे वो, okay? And cells को खराब कर रहे हैं, इसलिए वो लोग tissues को खराब कर रहे हैं, इसलिए वो लोग organs को खराब कर रहे हैं. So it's very important to understand how a cell works and how diseases then make the cell functioning go wrong and how can we treat it. Next is organ transplants. You all must have heard that everyone has two kidneys and you only need one kidney to live your life. And if someone's kidney is damaged to a large extent, you can take kidney from one person's body, take it out, and put it in some other person's body, and that is known as organ transplant, right? And it does not happen only for kidneys; it happens for various different organs of our body. Okay, many different organs can be transplanted from one human being to another. So that's again an application of cell biology and biotechnology. Only when you have very good technology, you can do such a big thing. And the last and um, not so well known application of biology, cell biology, biotechnology is forensic science. Have you heard this? Forensic science. So forensic science, actually it's a course, you can do it after taking science in 11, 12. And forensic science, the people who study that, these people will be called um, on, to a place where a murder has been taken place. Okay, अगर कहीं पे murder हो जाता है, we'll call people from the forensic department of the police. And those are basically biologists जिन्होंने cell biology बहुत अच्छे से पढ़ा और जिन्होंने biotechnology अच्छे से पढ़ा है. तो वहाँ पे क्या कौन से fingerprints है, वहाँ पे कौन से फॉर एग्जांपल सेल टिश्यूज मिल रहे हैं, वहाँ पे कोई ब्लड स्टेन्स है क्या, ब्लड स्टेन्स में वो लोग डीएनए मैचिंग कर सकते हैं. सो मेनी थिंग्स यू कैन डू. सो अगर कोई क्राइम सीन होगा तो क्राइम सीन पे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से पहले या फिर कोई डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने से पहले दे विल फर्स्ट कॉल फॉरेंसिक साइंस पीपल फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट. दे आर गोइंग टू डू देयर प्रिलिमिनरी एनालिसिस कि अच्छा कहीं पे खून दिख रहा है क्या, कहीं पे सेल टिश्यूज मिल रहा है क्या, एंड दे आर गोइंग टू एनालाइज एंड दे आर गोइंग टू ट्राई टू मेक some sense out of the crime scene. Okay, so that's again an application of cell biology and biotechnology. So cell biology, biotechnology, it's a very important chapter for humans, especially if you want to become a doctor, if you want to save lives, if you want to make medicines, if you want to make vaccines, which is such an important thing these days, given the given the lockdown and the pandemic. You need to have a very good understanding of the cell and all its organs which are present inside the cell, and all the application is then
a new field which has emerged is biotechnology. Again, biotechnology, you can do BTech, which is engineering in biotechnology also after your 12th standard. It's a 4-year course where you study biotechnology. That's also an emerging field if you're interested in it. Okay, so these are the reasons why we should study this chapter. It's extremely important for so many reasons. Okay, so now that we know why this chapter is important, we can start looking at the chapter itself. Okay, so these are the topics we're going to cover today. First is cytology and second is stem cells. Okay, how do you pronounce this? CY site, TO is top and LOGY is logy. Logy means किसी का तो study करेंगे. Cyto मतलब क्या देखेंगे. Okay, so cytology and stem cells. These are the two topics we're going to cover today. These are the new words we're going to learn today. First is sterile, second is vial. Okay, sterile and vial. These are the objectives for today. First, students will be able to recall यानी याद करना terms and concepts related to the chapter learned in previous grades. तो इसमें बहुत सारी चीजें जो already तुम लोगों ने पढ़ी है वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे. तुम्हें you'll have to recall them in order to understand this chapter very well. Okay, and the second objective for today is going to be students will be able to explain cytology and stem cells. Cytology and stem cells के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, you should be able to explain it at the end of the learning session. Okay. So there are can you recall type of questions given on page number 88 of your textbook. What I want you all to do is read the questions, try to answer it by yourselves and write it down in your notebooks. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and write answers to these questions in your notebook right now, and then we will discuss the answers. Okay, most of this, in fact, all of this we have already studied in our previous class, which is grade 9. Okay, I'll give you 5 seconds for you to pause and write down the answers. Okay, I hope you paused the video and are ready with your answers. Let's check the answers now. So the first question was what is cell? Okay, and you know what is cell. I actually kind of gave away the answer while talking about cell biology when we were discussing why is it important to study this chapter. So once you know cell, then what is tissue and what are the functions of tissue? Okay, so what is cell? One line definition of cell is the basic structural and functional unit of life. Okay, दूसरी चीज क्या होती है? एक तो है लाइफ होता है, दूसरा होता है मैटर. राइट, मैटर यानी जो कुछ भी सॉलिड सॉलिड नॉट नेसेसरी सॉलिड बट जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे आजू बाजू, जो कोई भी मास है, could be solid, liquid, gas, whatever, all of those things are made up of atoms. Okay, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं, वुड में कार्बन के एटम्स होते हैं, कॉपर में कॉपर मेटल के एटम्स होंगे. तो जो कुछ भी मैटर है हमारे आजू बाजू, ऑल ऑफ दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स. ओके, सिमिलरली अगर लाइफ है, लाइफ यानी लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, उसमें जो सबसे छोटी छोटी यूनिट्स होंगे वो होंगे सेल्स. ओके, छोटे छोटे सेल्स मिलके पूरा बॉडी बनाने वाले और वो लोग लाइफ बनने वाला है. ओके, इट इज गोइंग टू कंप्राइज लाइफ. ओके, तो सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? जो फंक्शन सेल का होगा वही फंक्शन पूरे के पूरे बॉडी का होगा. एज सिंपल एज दैट. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल. सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टुकड़ा लाइफ के लिए. ओके, एंड व्हाट इज टिश्यू? वी हैव लर्नड टिश्यू अगेन in our previous classes, right? A group of cells having same origin, same structure and same function is called tissue. अगर कुछ cells साथ में आ जाते हैं और वो एक ही जगह से आए हैं, एक ही तरीके से आए हैं, ओके, उसका मतलब है origin. origin यानी कहाँ से आए हैं वो. So अगर एक ही प्रोसेस से बने हैं, एक ही जगह से आए हैं वो सब, सेम स्ट्रक्चर, दिखने में सेम है, ओके, एंड सेम फंक्शन, उनका काम भी सेम है. तो जब ये तीन चीजें सेम हो जाती है एक ग्रुप ऑफ सेल्स की, तो उसे टिश्यू बोलेंगे, राइट? So when a group of cells have the same origin, same structure and same function, we'll call those group of cells as tissue. Okay, so that was tissues. What are the functions of tissues? Again, we had seen functions of different types of tissues in detail in one of the chapters in grade 9. So this is going to be again a revision of that. Okay, these questions have been omitted from your syllabus, okay, for this year. That's why I am asking you to write or copy these small answers in your notebooks, but don't copy this in your notebook, okay, because it's anyway being cancelled from your textbook, okay, or your syllabus. So animal tissues में हम लोग ने epithelial tissues देखे थे, जो क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं ऑर्गन्स के आजू बाजू. हमने कनेक्टिव टिश्यूज देखे थे जो जिसके एग्जांपल्स है ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज. हमेशा कुछ चीजों को कनेक्ट करने वाले. कार्टिलेज, इफ यू रिमेंबर, आर ईयर्स. ये जो फ्लेक्सिबल सॉलिड चीज है इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं. फिर यहाँ पे भी नाक में ये जो फ्लेक्सिबल
चीज है उसको कार्टिलेज बोलते हैं. बोन्स you'll know, blood you'll know. Okay, so they join different parts. Those are connective tissues. Muscular tissues you'll know, they are made up of muscles, और muscles की वजह से हम move कर पाते हैं. Whenever I'm also waving my hand around, I'm using my muscles. Okay. Nervous, whenever you hear the word nervous, it means it is related to your brain and spinal cord. Okay, nervous means related to brain and spinal cord. So nervous tissues में क्या क्या होगा? Nervous tissues में basically तुम्हारे nerve cells होंगे. Okay, सो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाना है या फिर बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाना है, इट इज गोइंग टू यूज नर्वस टिश्यूज. ओके, देन वी हैड सीन प्लांट टिश्यूज. सो फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट टाइप वाज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, इसको आधा आधा लिखा है, मेरिस्टेमेटिक. Okay, this is one word, meristematic tissues. So meristematic tissues we had seen, और उसका main function क्या है? Growth लाना. Okay, so meristematic tissues can stretch and expand themselves, जिससे plant का जो size है वो increase होगा. Okay, so those are meristematic tissues, जिसकी वजह से plant grow होने वाला है. And then we had seen also permanent tissues. Permanent tissues के well defined functions होंगे. Okay, वो भी ज्यादा change नहीं होंगे. तो उनके क्या क्या functions हो सकते हैं? Food को transport करना, right? प्लांट्स विल अंडरगो फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से वो लोग अपना खुद का खाना बनाएंगे और वो खाना पूरी बॉडी तक पहुंचना चाहिए. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. वाटर विल जनरली बी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट? मिट्टी जो होगी उसमें से पानी एब्जॉर्ब करेगा रूट्स. सो वट एवर वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, दैट हैज टू रीच द एंटायर प्लांट, राइट? तो वाटर को भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग टाइप के permanent tissues के. So ये सारे different types of tissues we had seen in detail in our previous class, grade 9. Okay, so it was just a quick revision. Next, which technique in relation to tissues have you studied in earlier classes? Okay, so the answer is tissue culture. Tissue culture is a technique related to tissues, और ये हम लोग ने again grade 9 में पढ़ा था. Okay, so next question is, which are the various processes in tissue culture? So if you'll remember, I'm sure you must remember this diagram, right? ऐसा एक diagram देखा था grade 9 के textbook में, and that's why grade 9 is known as the base of grade 10. Grade 8 and grade 9, both of these classes are known as the base of grade 10. अगर तुम लोग ने 8th grade और 9th grade में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, if you have really sincerely studied everything in 8th grade and 9th grade, 10th standard becomes very easy because many things overlap. Once you know those things very well, 10th standard concepts become very easy. So that here is one example. Okay, the same to same diagram which was given in grade 9 textbook, it also comes up in grade 10 textbook. Okay, so I did wait for 5 seconds for you to pause and complete all the answers, right? So I'm not sure how many of you all were able to remember this. It's a little difficult to remember these small things, but here is the answer. Okay, yes. So basically you take a source plant, and from the source plant you will take out some bulb corm. Okay, तो source plant में से bulb corm ले लो, उसको एक कंटेनर में रख दो. कंटेनर में पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी और फिर बाद में जो सोर्स प्लांट का बल्ब कॉर्म रखा है, दैट इज गोइंग टू अंडरगो रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन यू ऑल नो, राइट? व्हेन one cell divides and produces more than one cells or give rise to one more than one cells, it is known as reproduction and multiplication. क्योंकि ज्यादा हो रहा है, right? Multiply हो रहा है, number of cells are multiplying. So reproduction and multiplication होगा. Then shooting and rooting. What is shoot? Shoot is the part which is above the soil. Okay, मिट्टी के ऊपर जो part होता है, that is known as shoot, and मिट्टी के नीचे जो part होता है उसको बोलते हैं root. So नीचे roots होंगे, ऊपर का जो system होगा उसको shoot बोलेंगे. So shoot system and root system का जो growth होता है उसको बोलेंगे shooting and rooting. Shoot above the soil, root below the soil. Okay, then primary hardening, you take it out of the container, and it is going to grow a little outside the container. And then the secondary hardening, where it resembles more like a plant, वो भी plant की तरह दिखने लग जाता है, and that is going to again grow into a complete adult plant, and the cycle can continue. Okay, so these were the various processes in tissue culture. इस पूरे process, complete process को tissue culture बोलते हैं, and these are the various processes within tissue culture. Again, we had seen in detail in our previous class. It was just a revision of that concept. Okay. So now let us look at cytology. Okay, so what is cytology? Cytology is basically a short form of cell biology. Okay, cytology is a short form for cell biology. यानी cell के बारे में जो कुछ भी detailed study होगी वो cytology में पढ़ेंगे. So it is a study of structure,
types and organelles of cell. Again, what are organelles? Is just a fancy name for organs. जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग organs होते हैं, वैसे सेल के अंदर भी अलग अलग organs होते हैं. For example, mitochondria is one of the examples of organs inside a cell, right? So अलग अलग organs को पढ़ेंगे सेल के, अलग अलग टाइप के सेल्स को पढ़ेंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे सेल्स के. ओके, ऑल दैट विल बी cytology. Okay, it includes the study of cell division and many other aspects of the cell. Cell division we had studied in detail in chapter number 3, right? 2 or 3, I'm not sure, but either of the two. Life processes, so उसमें हम लोग ने mitosis meiosis डिटेल में पढ़ा था, right? So mitosis meiosis क्या है? Cell division है, so it should ideally come under cytology. ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स भी जो सेल के होते हैं वो साइटोलॉजी में पढ़े जाएंगे. There are revolutionary changes in the field of human health due to cell biology. क्योंकि हम लोग ने सेल बायोलॉजी में इतना प्रोग्रेस कर लिया है साइंस में, there's so many different changes that are being taken place, that are happening in the in human health. Okay, say for example 100-200 years back people did not live so long. Okay, वो लोग people used to live for 40-50 years max. अगर तुम लोग को बचपन में कहीं पे कहीं पे कट हो गया, इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई बीमारी हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बुखार आ गया, पीपल टू डाई देन एंड देयर इटसेल्फ. ओके, बट नाउ बिकॉज मेडिसिन हैज medical science has improved so much, we have studied cell biology in such detail. That's why many revolutionary changes, revolutionary यानी एकदम बहुत ही बड़ा चेंज, पूरी तरीके से बदल देने वाला चेंज आया है किसमें? ह्यूमन हेल्थ में. ओके, कोई भी डिजीज होगा, most probably we do have a medicine for that. So many things we also have vaccines for, right? उसकी वजह से काफी change आया. Research institutes specially dedicated for research on cells are established at Pune and Bengaluru in India. Okay, ऐसे research institutes है, पूरा का पूरा जो institute है वो सिर्फ cells के ऊपर research करेगा. ऐसे भी institutes है इंडिया में, एक पुणे में, एक बेंगलुरु में. Okay, so National Center of Cell Science is in Pune and InStem is at Bangalore. Okay, and here they have given some websites. So what I can do is I can put these websites in the description of this video, and you all can go and visit visit these websites of these institutes जिनका काम क्या है? सिर्फ cells के ऊपर research करना. And you can look at the projects they are undertaking, you can look at what type of research they are doing and just find out more. Okay, so I'll be putting these links in the description of this video. If you are interested, you can go and visit these websites. Okay, so that was cytology. Next, stem cells. What are stem cells? These are special types of cells present in the body of multicellular organisms. Multicellular यानी जो एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं. जो एक से ज्यादा सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, राइट? सो ये स्पेशल टाइप के सेल्स जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होंगे. These cells give rise to all other types of cells present in the this is not boy, this is body. Okay, this is a printing mistake. So no, not printing mistake, typing mistake, but I call it printing mistake. Okay, so this is body and not boy. So these cells give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organisms. So multicellular organisms में बहुत अलग-अलग types के cells होंगे, right? You will have neurons which will make your brain cells. You will have different types of cells which will make your intestinal cells, different cells for liver, different cells for heart, different cells for your bones. So इस सारे के सारे जो cells है multicellular organisms से वो सब अलग-अलग type के हैं. तो कहीं से तो आने चाहिए, right? कहाँ से आते हैं? स्टेम सेल से आते हैं. ओके, सो पहले स्टेम सेल्स होंगे और स्टेम सेल्स में से अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बनेंगे और उन अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स से अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनेंगे, अलग अलग टाइप के टिश्यूज से अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे. ओके, तो जितने भी अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स एंड उसके टिश्यूज एंड उनके सेल्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेम सेल्स से आते हैं. ओके, सिमिलरली दीज सेल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वुंड हीलिंग. वुंड यानी क्या? जख्म. तो कहीं पे जख्म हो जाती है तो अगर उसको हील होना यानी ठीक होना, तो वुंड हीलिंग यानी कोई जख्म ठीक होने वाली होगी, उसमें भी स्टेम सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, सो दीज वर स्टेम सेल्स. New organism is formed from zygote, that is formed by union of male and female gamete. Okay, again we have seen this in detail
in chapter number 3, right? Reproduction, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे. So you need a female gamete and you need a male gamete. So when female gamete and male gamete, in case of humans, female gamete is the egg and male gamete is the sperm. But अलग अलग animals में, अलग अलग plants में ये अलग अलग चीजें हो सकती है. But at the end of the day, you need one female gamete, you need one male gamete. Both of them will come together in the process called as fertilization. Fertilization इस process को बोलते हैं जब male gamete and female gamete साथ में आ जाते हैं and they form zygote, and फिर zygote में से embryo बनेगा and embryo will then be converted into a new organism, right? So a new organism is formed from the zygote that is formed by union of male and female gametes. Male and female gametes जब साथ में आते हैं तब zygote बनता है और zygote में से फिर नया organism बन जाता है. At the earliest stage of development, organism is in the form of a mass of cells. Okay, starting में यहाँ पे जब zygote से embryo बनेगा, so वो बस एक collection of cells होगा. mass of cell यानी collection of cells. वो बस कुछ cells होंगे जो साथ में आ चुके हैं, उतना ही होगा एकदम starting के development phase में. All the cells in that mass are almost alike. Okay, तो जो मास में जितने भी सेल्स होंगे वो सब एक जैसे ही होंगे, बहुत अलग अलग नहीं होंगे. ब्रेन सेल अलग, बोन कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स अलग, लिवर के सेल्स अलग, किडनी के सेल्स अलग, ऐसा नहीं होगा. सारे के सारे सेल्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होंगे. ऑलमोस्ट अलाइक, अलाइक यानी एक जैसे. सो जो मास होगा, वो जो कलेक्शन ऑफ सेल्स होगा, मोस्टली सेम टाइप के सेल्स होंगे. दो सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. तो बेसिकली वो स्टेम सेल्स है. और फिर वो जो स्टेम सेल्स बने हैं जब वो मास ऑफ सेल्स बन रहे एकदम अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, उसमें जो स्टेम सेल्स है उसमें से फिर अलग अलग टाइप्स के सेल्स बनने वाले जब वो नया इंडिविजुअल बनेगा. ओके, नेक्स्ट. ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट these cells form any type of cell, different type of tissues and perform different functions in the body. तो पहले जो स्टेम सेल्स बन रहे हैं स्टार्टिंग के डेवलपमेंट फेज में, वो जो स्टेम सेल्स है वो फिर बाद में जाके अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनेंगे और अलग अलग फंक्शंस करेंगे. ओके, दे कैरी आउट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. ओके, सब हर सेल का अपना अपना एक अलग काम होता है, राइट? फॉर एग्जांपल द सेल इन किडनीज, उनका क्या काम क्या होगा? प्यूरिफिकेशन. द सेल इन ब्रेन्स, उनका काम क्या होगा? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना. तो सारे सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. तो फंक्शंस कब डिसाइड होंगे? जब स्टेम सेल्स अलग अलग टाइप के सेल्स बन जाएंगे. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन कौन से वर्ड से बना है? डिफरेंट, राइट? डिफरेंट ये जो वर्ड है उस वर्ड से डिफरेंशिएशन बना. सो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? इन स्टेम सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म or they form different type of cells or different types of tissues and then they start performing different functions. It is called as differentiation. Okay, so जब stem cells अलग अलग टाइप के cells, tissues और अलग अलग functions वाले cells बन जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको differentiation बोलेंगे. However, once the tissues are formed, the cells in those tissues are at the most sorry, I'm going to read that again. However, once the tissues are formed, the cells in those tissues at the most can form same types of cells only. Okay, so अगर एक stem cell हो गया, stem cell से कोई different type का cell बन गया, जब एक बार different type का cell बन गया तो वापस वो दूसरा टाइप का सेल नहीं बना सकता, या फिर दूसरे टाइप का सेल फिर कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, वो भी उसी टाइप का सेल बनेगा. अगर ये डिवाइड हो गया, ओके, इफ दिस टाइप ऑफ सेल इज अगेन डिवाइडेड, तो सेम टाइप के सेल्स ही बनेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स है. ओके, स्टार्टिंग में स्टेम सेल से फॉर एग्जांपल तुम्हारे किडनी के सेल्स बन गए. ये जो किडनी के सेल्स बने हैं उसमें से ब्रेन सेल्स नहीं बन सकते, किडनी के सेल्स में से लिवर के सेल्स नहीं बन सकते, किडनी के सेल्स में से इंटेस्टाइन के सेल्स नहीं बन सकते. ओके, एक बार किडनी के सेल्स बन गए वो किडनी के सेल्स ही बने रहेंगे. ओके, एट द मोस्ट किडनी के सेल्स अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन दे विल अगेन फॉर्म किडनी सेल्स ओनली. ओके, सो एक बार डिफरेंट टाइप का सेल बन गया स्टेम सेल, तो वापस कोई दूसरे टाइप का सेल नहीं बनेगा, सेम टाइप के सेल्स ही बनते रहेंगे. ओके, however stem cells are present for longer duration in some parts of the body. तो stem cells starting में कहाँ पे होते हैं? when you're just being I mean months before you are born, right? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट साथ में आके जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद स्टेम सेल्स बनते हैं, राइट? एंड फिर बाद में उसमें से अलग अलग टाइप के सेल्स बनने लग जाते हैं. बट कुछ कुछ जगहों पे इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी द स्टेम सेल्स रिमेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. ज्यादा टाइम के लिए स्टेम सेल्स वैसे के वैसे रहते तुम्हारे बॉडी में. ओके, हम लोग स्टेम सेल्स के बारे में इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट स्टेम सेल्स?
द थिंग विच इज स्पेशल अबाउट स्टेम सेल्स इज वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकता है, राइट? सो अगर तुम्हारे पास एक स्टेम सेल है, तुम उसको अगर किसी बॉडी के पार्ट में डाल के उस बॉडी के सेल के टाइप्स बना सकते हो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। अगर कहीं पे समझो कोई बॉडी का पार्ट कट गया है, तो उसमें तुम्हें रिप्रोड्यूस करना है अलग अलग टाइप के सेल्स, उसमें स्टेम सेल्स बहुत काम का हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इतना इजी नहीं होता कि समझो किसी का बॉडी कट कर लो, उसमें से किडनी को कट करो, किडनी को कट करके इसके किडनी में डाल दो, और फिर बाद में ऐसा फेविक्विक लगा के उसको जोड़ दो, और फिर बाद में सब कुछ ठीक से चलने लगेगा। इतना इजी नहीं होता, राइट? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। एंड अगेन यहाँ पे भी तुम्हें अलग अलग टाइप के सेल्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो स्टिक हो जाए। तुम लोग फेविस्टिक या फिर फेविगम या फिर ग्लू नहीं लगा सकते, राइट? किडनी को स्टिक करने के लिए तो तुम लोगों को कुछ ना कुछ लगेगा। तो कुछ ना कुछ क्या है, बेसिकली उस टाइप का सेल लगेगा। उस टाइप का सेल तुम बना सकते हो क्या? नहीं, ह्यूमंस अलग अलग टाइप के सेल्स नहीं बना सकते, बट कौन बना सकता है? स्टेम सेल्स बना सकते हैं। इसलिए हम लोग स्टेम सेल्स को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, बिकॉज दैट्स द एडवांटेज स्टेम सेल्स हैज। अगर तुम स्टेम सेल्स को अच्छे से कंट्रोल करने लग गए, तुम कोई भी ऑर्गन बॉडी का वापस बना सकते हो, क्योंकि स्टेम सेल्स कैन मेक एनी टाइप ऑफ सेल्स। सो दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू study stem cells in such detail. Okay, so the last point was हमारे बॉडी में कहीं कहीं पे स्टेम सेल्स काफी ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं। ओके, सो व्हाट आर दोस बॉडी पार्ट्स? So stem cells are present in the umbilical cord. How do you pronounce this? UM is BI is B, LI is Li, CL is Kal. Umbilical. Umbilical. Okay, so umbilical cord. So stem cells are present in the umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother. Okay, so now again try to remember what is uterus. Try to remember, try to recall the female reproductive system, right, which we are studying in chapter number 3. Female reproductive system, it has ovaries at the left and the right corner, and beach mein uterus hoga, right? From the ovaries the egg cells are going to be they are going to be released, and when the egg cells are released, at the same time first sperm enters the uterus, they're going to get fertilized, and zygote is going to form. The zygote is then going to form an embryo, and that embryo is then going to form अ फीटस। एंड ये सब कहाँ पे हो रहा है? यूटरस में। ओके, यहाँ पे अगर ओवरी है, ओवरी से यहाँ पे एक पोर्शन होता है, राइट? ये जो बीच वाला पोर्शन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको यूटरस बोलेंगे। सो यूटरस में फीटस होता है। सो द फीटस इज joined to the mother through the uterus through a cord. Okay, so अगर वो जो बेबी है वो अगर मदर के यूटरस में है, मदर के बॉडी से कैसे कनेक्टेड होता है? वो एक कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, एक वायर जैसा होता है, एक ट्यूब जैसा होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। सो अम्बिलिकल कॉर्ड से ये जो फीटस है वो मदर के बॉडी से कनेक्टेड होता है। ओके, सो अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टेम सेल्स होते हैं। Next, stem cells are also present in the blastocyst stage of embryonic development. Okay, so these are many big words in one sentence. Let us break it down. Blastocyst. Okay, blastocyst. Blastocyst we have already again seen in chapter number 3 in asexual reproduction. Okay, blastocyst stage क्या होता है? Okay, so वहां पे हम लोग ने unicellular organisms के लिए पढ़ा था blastocyst stage. But the same stage is also present in embryonic development. So let us break this down. Embryonic ये word किससे बना है? Embryo I told you, right? Male gamete, female gamete, they come together through fertilization to form a to form a zygote. Zygote then forms into embryo. So embryo का जो development होगा उसको embryonic development बोलेंगे. Okay, I'm going to repeat this one more time. The male gamete and the female gamete, they're going to come together, and through fertilization they're going to form a zygote. That zygote is then going to be converted into embryo, right? And that embryo का जो development होगा fetus में उसको बोलेंगे embryonic development. So embryonic development में अलग अलग stages होते हैं। Okay, यहाँ पे ovary है, ovary में से egg cell आ रहा है, egg cell यहाँ पे fertilize हो रहा है, और फिर यहाँ पे अलग अलग stages होते हैं। Okay, जब तक वो uterus में पहुंचता है। तो यूटरस में पहुंचने से पहले जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डिटेल्स। तुम्हें क्या याद करना है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में स्टेम सेल्स होते हैं, तो इस वाले स्टेज में स्टेम सेल्स होंगे। ओके, बाकी किसी स्टेज में नहीं होंगे। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? फ्रॉम ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी में से यूटरस तक पहुंचने तक जो अलग अलग स्टेजेस है उसको यहाँ पे दिखाया है। ओके, सो स्टेम सेल्स कहाँ पे है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी है। Okay, next,
Stem cells are present in red bone marrow and adipose connective tissue of adult human beings. Okay, let us first look at red bone marrow. So basically, if this is your bone, इसमें दो टाइप के मैरो होते हैं. ओके, येलो मैरो एंड रेड मैरो. सो यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज येलो मैरो, जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज रेड मैरो. एंड रेड मैरो पहले पहले स्टार्टिंग में when we are young, तब रेड मैरो ज्यादा होता है. ओके, ये पूरा का पूरा मोस्टली रेड मैरो से भरा होगा स्टार्टिंग के इयर्स में. और धीरे धीरे एज वी एज, जैसे हम लोग टीनेजर्स बनते हैं, जैसे हम अडल्ट बनते हैं, देन वी एज लिटिल, वी बिकम 40 इयर्स 50 इयर्स, वैसे वैसे जो रेड बोन मैरो वो कम होते जाता है एंड येलो मैरो इंक्रीज होते जाता है. ओके, सो रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है, स्टेम सेल्स. तो बेसिकली रेड रेड बोन मैरो कम होते जाता है, राइट, एज यू एज. वैसे ही उसका मतलब क्या, स्टेम सेल्स भी कम होते जाएंगे. Okay, as you age. And adipose connective tissue, again we have seen this in detail in our previous grade. If you all want, you all can open your 9th grade textbook and find adipose tissue in that and see what it means, what are the examples, what are the functions. Okay, तो ये दो चीजों में भी यहाँ इन दो जगहों पे भी एडल्ट ह्यूमन बींग्स में मिलेगा. ओके, यहाँ भी ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये हमारे एडल्ट्स में नहीं होता. बिफोर as soon as the baby is born, the umbilical cord is cut. राइट, सिमिलरली ब्लास्टोसिस्ट स्टेज वो तो यूट्रस के अंदर होता है. ओके, सो ये तो एडल्ट्स में नहीं मिलेगा, बट एडल्ट्स में अगर तुम्हें स्टेम सेल्स चाहिए तो रेड बोन मैरो में मिल जाएगा और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में मिल जाएगा. ओके, it has become possible to produce different types of tissues and the degenerated part of any organ with the help of these stem cells. right, इसलिए मैंने बोला था स्टेम सेल्स इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेम सेल्स अलग अलग टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है. इसीलिए अगर तुम्हें अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनाने हैं या फिर कोई डीजेनरेटेड पार्ट, डीजेनरेटेड यानी जो डैमेज हो चुका है, डीजेनरेटेड यानी जो डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुका है, so, कोई डीजेनरेटेड पार्ट होगा किसी ऑर्गन का, तो उसको भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं. किसको यूज करके, स्टेम सेल्स को यूज करके. ओके, दैट्स व्हाई स्टेम सेल्स आर so important and hence we are studying it in so much detail. ओके, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, राइट. सो अगर स्टेम सेल्स इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, राइट. फॉर एग्जांपल ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कहीं पे ऑपरेशन वगैरह हो रहा होगा हमारा कोई काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा, काफी कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें हमारा काफी ब्लड लॉस हो जाता है, राइट. व्हाइल डूइंग द ऑपरेशंस, व्हेन द डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग इन यू, लॉट ऑफ ब्लड इज लॉस्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ब्लड. इसलिए हम लोग we try to donate blood and then we use the blood during operations, right. सिमिलरली अगर स्टेम सेल्स इतने इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल से तुम अलग अलग टाइप के सेल्स बना सकते हो, तो स्टेम सेल्स को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए, राइट. सो कैसे प्रिजर्व करोगे तुम, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, stem cell samples are carefully collected from sources like cord blood. What is cord blood? Basically जो umbilical cord है, as soon as the baby is born, उसमें से जो blood निकलेगा इस umbilical cord में से, उसमें से निकाल सकते हो तुम लोग स्टेम सेल्स. नेक्स्ट, रेड बोन मैरो में से निकाल सकते हो या फिर एम्ब्रियो में से भी निकाल सकते हो. इन तीन जगहों में से तुम लोग स्टेम सेल्स को निकाल सकते हो. ओके, प्रिजर्व करके रखने के लिए. ओके, जैसे हम ब्लड प्रिजर्व करके रखते हैं इमरजेंसीज के लिए, वैसे स्टेम सेल्स को भी प्रिजर्व करके रख सकते हो. अगर समझो तुम्हारी किसी ऑर्गन को डैमेज हो जाता है, यू कैन यूज द स्टेम सेल्स एंड यू कैन हील द ऑर्गन में जो कुछ भी पार्ट डैमेज्ड है उसको वापस बना लेगा वो स्टेम सेल. They are kept in small sterile vials. Okay, what is the meaning of sterile? What is the meaning of vials? These are the two new words we're going to learn today, right? So sterile means it's extremely clean. And clean का मतलब क्या है? I mean, when I say clean, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें धूल मिट्टी पड़ी है. Okay, that's not the type of clean I mean. So when I say extremely clean, इसका मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसमें कोई वायरस नहीं है, उसमें कोई फंगस नहीं है. सो स्टेराइल का मतलब है बहुत ज्यादा क्लीन है. और उस स्टेराइल वाला क्लीन का मतलब क्या है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसमें कोई पैथोजन नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड व्हाट आर वाइल्स? वाइल्स आर बेसिकली स्मॉल कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास. ओके, जैसा टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब काफी लंबा होता है, राइट. तो टेस्ट ट्यूब के साइज का बट काफी कम हाइट का, तो इतने छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं जो उसको वाइल्स बोलते हैं. ओके, सो जनरली वैक्सीन जो होते हैं वो इतने छोटे छोटे बॉक्सेस में होंगे, बॉक्सेस नहीं कंटेनर्स में होंगे ग्लास के. So उसको vials बोलते हैं. You know, one interesting article I was reading about coronavirus a few months back was वैक्सीन बन जाएगा. ओके, वैक्सीन का प्रॉब्लम नहीं है, बट वाइल्स का प्रॉब्लम है. इतने छोटे छोटे ग्लास के कंटेनर्स जो स्टेराइल होने चाहिए, कहाँ से लेके आओगे? इतने कम समय में इतने सारे वाइल्स कैसे प्रोड्यूस करोगे? दैट वाज अगेन अ चैलेंज.
सो वाइल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर तुम स्टेराइल वाइल्स नहीं बना पाए अच्छे से, तो जो वैक्सीन है उसको कहाँ पे स्टोर करोगे? स्टोर करने के लिए तुम्हें अच्छा क्लीन स्टेराइल वाइल चाहिए, राइट? सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल आई रेड a few months back related to vials. Okay. सो इन स्टेरल वाइल्स में तुम लोग क्या रखने वाले हो? स्टेम सेल रखने वाले हो, जो तुम लोग ने कहाँ से कलेक्ट किए? कॉर्ड ब्लड में से, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है उसमें से निकाला है, रेड बोन मैरो में से निकाला है, या फिर एम्ब्रियो में से निकाला है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो था उस एम्ब्रियो में से. ओके. और and those vials are kept in liquid nitrogen at minus 135 degrees Celsius to minus 190 degrees Celsius. Why using liquid nitrogen? You're using liquid nitrogen because liquid nitrogen helps you keep the temperature very low. Okay. तुम लोग फ्रिज से कितना कूल कर दोगे? फ्रिज से तुम लोग -1, -5, -10 डिग्री तक कूल कर लोगे, -30 डिग्री तक कूल कर लोगे, राइट? और उससे भी ज्यादा ठंडा करना होगा तो यू हैव टू यूज लिक्विड नाइट्रोजन. ओके. सो इतना कम टेम्परेचर पे तुम्हें मेंटेन करना है उसको, तो -135, -190 डिग्री सेल्सियस तुम्हें लिक्विड नाइट्रोजन यूज करना पड़ेगा. ओके. अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग. और जो मेजोरिटी ऑफ द वैक्सीन जो बन रहे हैं अभी कोरोना वायरस के, उनको भी काफी कम टेम्परेचर में रखना पड़ता है. अगर तुम ज्यादा टेम्परेचर पे रखोगे वो खराब हो जाता है वैक्सीन. सो अगर समझो ओके, तो अगर समझो इंडिया और चाइना, बिकॉज दीज आर द टू बिग कंट्रीज, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. चाइना इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे सब चीज मैन्युफैक्चर होते हैं. और इंडिया में भी बहुत ज्यादा वैक्सीन मेडिसिन वगैरह बनते हैं. इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ये काफी बड़े बड़े हैं. ओके. सो इंडिया एंड चाइना, दीज टू पीपल आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग वैक्सीन फॉर द वर्ल्ड. ओके. बट अगर इंडिया और चाइना में वैक्सीन बनाए हैं और उसको सारे वैक्सीन को यूरोप और अफ्रीका और यूएस में ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो ट्रांसपोर्ट करते समय तुम ऐसे एक बॉक्स में नहीं लेके जा सकते. उसको इतने कम टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ेगा. अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो वैक्सीन खराब हो जाएगा. तो तुम इतने कम टेम्परेचर पे इतने सारे वैक्सीन कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? अगेन दैट इज अगेन अ चैलेंज. ओके. कि इतने ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स जो इतने कम टेम्परेचर पे ऑपरेट करने चाहिए, कहाँ से आएंगे? कब प्रोड्यूस करेंगे? और एक ही बार प्रोड्यूस करके फेंक देंगे क्या? क्योंकि ये ऐसा पैंडेमिक बार बार तो होने नहीं वाला है. तो अगर एक बार तुम लोग ने बना दिया, नया नया प्लेन बना दिया, नया शिप बना दिया, नए रेफ्रिजरेटर्स खरीद लिए, एक बार उसको ट्रांसपोर्ट कर लिया, तो फिर क्या करेंगे उसका? So again, very interesting questions with respect to vaccine, and all this is related to stem cells also. Okay. Same is the case with stem cells. अगर तुम अपने स्टेम सेल्स के लिए प्रिजर्व कर रहे हो किसी बैंक में, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे स्टेम सेल्स के भी बैंक्स होते हैं. ओके. वहां पे अगर तुम प्रिजर्व कर रहे हो, वो लोग तुमसे बहुत ज्यादा पैसा लेंगे. ओके. ऐसा नहीं कि फ्री में रख दिया, हाँ ठीक है, एक लॉकर खोल लो बैंक में जैसा होता है और वहां पे सब इंपॉर्टेंट चीजें रख दो. उसको वो लोग काफी पैसे लेंगे, क्योंकि वो काफी स्टेराइल होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होना चाहिए, और बहुत कम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखेंगे. तो उनका जो फ्रिज का पैसा है वो तुम लोग ही भरोगे. ओके. तो तुम्हें स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने की इच्छा है, यू हैव टू पे लॉट ऑफ मनी. ओके. सो दैट वाज अबाउट स्टेम सेल प्रिजर्वेशन. Finally, there's again a use your brain type of question given on page number 89. The question says, just like the grafting in plants, is the organ transplantation possible in humans? तो grafting क्या है? grafting में basically तुम लोग एक प्लांट के टिश्यूज को निकाल के दूसरे प्लांट के टिश्यूज में ऐड करते हो और फिर दोनों मिलके एक नया प्लांट बन जाता है. दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग. तो सेम चीज तुम ह्यूमंस में कर सकते हो क्या? यस. आई मीन, आंसर इज वेरी सिंपल. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, राइट? The answer is yes. Organ transplantation is possible in humans also. The very prominent example is kidneys. Kidney transplantation हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं, right? With the development of medical science and technology, we can now transplant an organ to a patient whose organ becomes non-functional due to certain reason. क्योंकि अभी मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, अगर किसी इंसान का कोई एक ऑर्गन ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो लोग दूसरे किसी का ऑर्गन निकाल के उसमें लगा सकते हैं. ओके. एंड ऑर्गन डोनेशन इज ऑल्सो थिंग. ओके. सो ऑर्गन डोनेशन का एक फॉर्म होता है. अगर उस फॉर्म को तुम साइन कर दोगे, तो जैसे ही तुम्हारी डेथ हो जाएगी, दीज पीपल आर सब आई मीन योर रिलेटिव्स आर सपोज टू कॉल दोज पीपल, एंड वो लोग आके फिर तुम्हारे ऑर्गन्स लेके जाते हैं. एंड सी वंस यू आर ऑलरेडी डेड, राइट? तुम ऑलरेडी मर चुके हो, तुम्हें उन ऑर्गन्स के कुछ काम है नहीं. So what they do is they take out your organs, और जिनको एक्चुअली जरूरत है, जो लोग अभी तक मरे नहीं है, वो स्टिल लिविंग,
पर क्योंकि उनके कुछ कुछ ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, वो अच्छे से जी नहीं पाए, दे आर नॉट एबल टू लिव देयर लाइफ फुली, दे जस्ट ट्रांसप्लांट योर organs to them. So again, if you're interested, once you become adults, you all can sign up for organ donation. I also want to do it, but I haven't done it yet. I mean, I'm still waiting to do that, and I might do that someday. But yeah, it's an interesting thing. If you want to save lives without being a doctor, this is one way you can do it. अगर तुम लोग के बॉडी में से 4 organs 4 अलग अलग लोगों को यूज हो गए, तुम लोग ने 4 जानें बचा दी, राइट? So again, organ donation is something you can look into. Okay, and hopefully a few of you will decide to actually donate your organs. तुम्हें बस एक फॉर्म साइन करना होता है, और जो कुछ भी होने वाला है तुम मरने के बाद होने वाला है, so तुम्हें कोई पेन वगैरह भी नहीं होगा, डर भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं. So hopefully some of you all will sign up for organ donation once you all are adults. Okay, that's it for this learning session. Just check whether you have accomplished today's learning objectives or not. Can you recall different terms and concepts related to the chapter learned in previous grades? So can you tell me different types of animal tissues? Can you tell me different types of plant tissues? Can you tell me different processes in tissue culture? Can you tell me the structure of female reproductive system? So on and so forth. Can you tell me what is a zygote? Can you tell me what is an embryo? Can you tell me what is a fetus? All this you should be able to answer. Okay, and can you explain me what is cytology? And can you explain me what are stem cells and why are they so important? If you can answer these questions, it means you have accomplished today's learning objective. If you cannot answer these questions, maybe you need to watch the video again, maybe you need to open the textbook and read the textbook. Okay, do whatever it takes so that you accomplish today's learning objective. Okay, these are the new words we learned today. First is sterile, which is free from bacteria and it should be totally clean. Okay, and vial is just a small container made up of glass जिसमें हम लोग vaccines या फिर stem cells रख सकते हैं. Okay, so that's it for this learning session. I hope you understood everything. I hope you enjoyed. I hope you feel curious and you feel excited about learning this chapter. It has lots of applications in human life. Maybe before we die, we'll have to do a organ transplantation, and that time hopefully you all will remember, okay, इसके बारे में रोहन भाई ने कुछ बोला था और हम लोग ने 10th standard में पढ़ा था इसके बारे में answers. Okay, that is it for this learning session. I'll see you all in the next one. Till then, bye and peace.